മണ്ണിൽ നിന്നും മനുഷ്യപുത്രൻ വാഴുന്നവൻ മനസ്സിനുള്ളിൽ മോഹനരൂപം കാണാൻ വാഴുന്നവൻ മനസ്സിനുള്ളിൽ മോഹനരൂപം കാണാൻ തിരുവീതികൾ തേടാൻ അപരാധം വെടിയാൻ അഭിഷേകം നേടി അവതാരം പാടാൻ അഭിഷേകം നേടി അവതാരം പാടാൻ മാണിക്യക്കല്ലായി തിരഞ്ഞെടുത്തന്നെ മണ്ണിൽ നിന്നും മനുഷ്യപുത്രൻ മാണിക്യക്കല്ലായി തിരഞ്ഞെടുത്തന്നെ മണ്ണിൽ നിന്നും മനുഷ്യപുത്രൻ മാനവനായി മോചകനായി മാനവ ക്ലേശം നീക്കാൻ മാനവനായി മോചകനായി മാനവ ക്ലേശം നീക്കാൻ നിണനീരുകൾ ചിന്തി തിരുജീവൻ ഏകി സുരലോകം പൂകാൻ വരദാനം നൽകി സുരലോകം പൂകാൻ വരദാനം നൽകി മാണിക്യക്കല്ലായി തിരഞ്ഞെടുത്തന്നെ മണ്ണിൽ നിന്നും മനുഷ്യപുത്രൻ മാണിക്യക്കല്ലായി തിരഞ്ഞെടുത്തന്നെ മണ്ണിൽ നിന്നും മനുഷ്യപുത്രൻ. ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം. നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും ദൈവം മാണിക്യക്കല്ലായി തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. നാം തിളങ്ങുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ഇനിയുള്ളത്. ലോകമാകുന്ന ചേറ്റിൽ കിടന്ന നമ്മെ ദൈവം അതിനെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് മാണിക്യക്കല്ലാക്കി മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. ഹല്ലേലൂയ. നാം ഓരോരുത്തരും തിളങ്ങുന്ന ഓരോ കല്ലുകളായി മാറുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. യേശുവാകുന്ന മൂലക്കല്ലിനോട് ചേർത്ത് വെച്ച് നമ്മെ പണിയുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മാണിക്യക്കല്ലായി മാറുവാനാണ് യേശു ഈ ലോകത്തിലേക്ക് മനുഷ്യനായിട്ട് വന്നത് എന്ന് പാട്ടുകാരൻ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. ഈ ലോകത്തിലേക്ക് യേശു കടന്നു വന്ന് നമ്മെ ഓരോ മാണിക്യക്കല്ലായി മാറ്റാൻ, ഹല്ലേലൂയ, എല്ലാവരെയും ആകർഷിക്കുന്ന കല്ലായി മാറുവാൻ, എല്ലാവർക്കും പ്രയോജനമുള്ള കല്ലായി മാറുവാൻ, എല്ലാത്തിനേക്കാളും വിലപിടിപ്പുള്ള കല്ലായി മാറുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് തൻ്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനെ നമ്മളെ വീണ്ടെടുക്കുവാൻ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് അയച്ചു. ഹല്ലേലൂയ. നാം മാണിക്യക്കല്ലായിട്ടുണ്ടോ? ആയിട്ടില്ല എങ്കിൽ ദൈവം നമ്മെ വീണ്ടെടുത്തു. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ലോകത്തിലേക്ക് അയച്ച് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും പാപത്തെ പോക്കാൻ കർത്താവ് നമ്മെ നമുക്ക് വേണ്ടി തൻ്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനെ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് അയച്ചു. എന്നാൽ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു, സ്നാനപ്പെട്ടു, എങ്കിലും കറ പുരണ്ടിരിക്കുകയാണോ, ചെളി പുരണ്ടിരിക്കുകയാണോ എന്നുള്ളതാണ് നാം നോക്കേണ്ടത്. हर एक व्यक्ति को छुड़ाने के लिए और एक रत्न बनाने के लिए, रत्न का पत्थर बनाने के लिए परमेश्वर में चुना गया है. उसके लिए उनका एक लौते बेटे को भी इस दुनिया में भेजा है. हालेलुया. इस दुनिया में भेजकर उन्होंने हमें खरीद लिया है, हमें छुड़ा लिया है, मगर आज भी हमें हमारे अंदर ज्योति आया नहीं है. तो वो
वो पत्थर परमेश्वर चाहते वैसा नहीं हुआ तो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता है. ഹല്ലേലൂയ. इसके लिए നമ്മളെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് നമ്മളെ രക്തം കൊണ്ട് കഴുകി നമ്മെ ശുദ്ധീകരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിലാണ് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഒരു രത്നക്കല്ലായി तिलंगना कल्लाई. हालेलुया. हमको चमकने वाला पत्थर बनाने के लिए परमेश्वर चाहता है. हम कितना चमकते हैं. हम परमेश्वर का वचन रोज व रोज सुनते हैं और उसी हिसाब से हम चमकना मांगते हैं. हालेलुया. तो इसलिए हमारे अंदर चमक आने के लिए परमेश्वर ये प्रार्थना के जरिए हमें बना रहे, हमें सहायता कर रहे. हालेलुया. यीशु मसीह के चरणों में हम आया और उनका बेटा बेटी बनने के लिए हम अपने आप को समर्पण कर दिया. इसके लिए परमेश्वर हमें बना रहे. हालेलुया. वो इसके लिए समर्पण कर पूरी तरह से हम कल का वचन का बाकी हम सुनेंगे. हमारा यीशु हमारे साथ रहेगा तो हमारे साथ है क्या, साथ रहेगा तो हमें जरूर हमारा जीवन में बदलाव आएगा. हम 2 दिन से चिंता कर रहा है. परमेश्वर हमें चुन लिया है. परमेश्वर का वचन हम सुन रहा है और वचन के अनुसार हमारे जीवन को बदलते रहते हैं और तो परमेश्वर हमारे साथ रहेगा. നാം അവൻ നടന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾക്ക് നടക്കേണ്ടതാകുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. അവൻ നടക്കേണ്ടുന്ന രീതിയിൽ അവൻ നടന്ന രീതിയിൽ നമുക്കും നടക്കണം. ഹല്ലേലൂയ. അവൻ വസിച്ച രീതിയിൽ അവനോട് കൂടെ വസിക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയണം. അവൻ എപ്രകാരം ഈ ലോകത്തിൽ വസിച്ചുവോ അപ്രകാരം നാമും അവനോട് ചേർന്ന് വസിക്കുവാൻ, അവനിൽ വസിക്കുവാൻ, യേശുവിൽ വസിക്കുവാൻ, പിതാവിൽ വസിക്കുവാൻ ഇടയായി തീരണം. परमेश्वर में वास करने के लिए, परमेश्वर के साथ चलने के लिए परमेश्वर हमें बुलाया है. हालेलुया. इसके लिए हम परमेश्वर में परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह को खाने का है करके परसों का दिन हमने सुना. यीशु के द्वारा हमें जीवित रहने का है करके परमेश्वर हमें सुनाया. वचन के जरिए हमें जीवन बिताने का है. वचन हमें खाने का है. वचन हमें ढूंढ कर निकाल कर खाने का है करके हमको सुनाया. हालेलुया. हम वचन के अनुसार हम जीते हैं क्या? वचन सुनने के लिए हमें अच्छा लगता है क्या? कल हमने सुना वचन हनी से भी मीठा रहता है करके. यदि हम एक वचन सुनने का समय हमारा मुंह में हनी के समान मीठापन अनुभव कर रहा है, हम वो वचन सुनने का समय एकदम और भी पाने के लिए इच्छा रखते हैं क्या? ये परमेश्वर हमें पूछ रहा है. एक दिन वचन सुनने का समय और भी सुनना है, और भी पाना है, और भी वो वचन में रहना है, वचन मुझे खाना है, ऐसा चिंता हमारे जीवन में आना मांगते करके कल हमको वचन सुनाया. वचन हमें प्रकाश देने वाला वचन है. वचन हमें हमारा पैरों का दीप बनाकर हमारे जीवन का अंधकार निकाल कर देने वाला वचन है. वचन को स्वीकारने का जैसा स्वीकारा नहीं है तो अंधकार निकलेगा नहीं. हालेलुया. हम अच्छी तरह से परमेश्वर को डरते हुए उनका वचन सुनने का और स्वीकारने का, तभी हमारा जीवन में वो मीठा हो जाता है. नहीं तो वो एक उजाला देने वाला, अंधकार में उजाले देने वाला वचन बन जाता है. कैसा भी चिंता कर कैसा भी जीने के बाद हम वचन सुनेगा तो हमें वो मीठा नहीं लगेगा. हमें वो अंधकार से छुड़ाने वाला प्रकाश नहीं बनेगा. इसलिए हमारे जीवन को वचन में जीने के लिए हमें तैयार करना बहुत ही जरूरी है. परमेश्वर का वचन बोल रहा है, यीशु का वचन सुनने का समय सभी रुकावट दूर होता है.
मगर हमारा रुकावट दूर नहीं होता है तो सोच लेने का, वचन को हम जैसा स्वीकारने का है वैसा स्वीकारता नहीं है। रुकावट दूर होने के लिए वचन को स्वीकारना बहुत ही जरूरी है। वचन जैसा परमेश्वर चाहते हैं वैसा स्वीकारना मांगते हैं। तो इसके लिए हमारा रुकावट दूर होने के लिए हम जैसा पहले करते आया वैसा नहीं करना है, कुछ बदलाव हमारे अंदर डालना है। वचन सुनने का समय है, हमारे अंदर बदलाव आना मांगते करके परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है। हालेलुया। तो पर आज का दिन हमें उसका बाकी हम चिंता करेंगे। वचन कल हमने सुना वचन संगीता पहले अध्याय में दूसरा वचन में लिखा है, वचन ध्यापकल ध्यानिക്കുന്നവൻ भाग्यवान। वचन दिन रात ध्यान करने वाला व्यक्ति भाग्यवान है करके लिखा है। भाग्यवान का मतलब क्या है? धन्य हो जाएगा करके लिखा है। भाग्यवान बोलेगा तो നമുക്കറിയാം, ഒരു ലോട്ടറി അടിച്ചാൽ ഭാഗ്യവാനാണെന്ന് പറയും. അപ്പം ലോട്ടറി അടിച്ച് ഭാഗ്യം വരുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അവന് കിട്ടുന്ന പൈസ കൊണ്ട് അവനില്ലാത്തതെല്ലാം അവൻ വാങ്ങിക്കും. ഹല്ലേലൂയ। അപ്പം परमेश्वर का वचन सुनने से हमारा चारों तरफ जो कमीपन है, जो दुख है, सब कुछ निकल जाएगा और एक बड़ाई अनुग्रह हमारा जीवन में आएगा। अതാണ് भाग्यम, वही भाग्य है। परमेश्वर का वचन सुनने वाला, दिन रात उसको ध्यान करने वाला भाग्यवान है करके लिखा है। तो धन्य है करके लिखा है, तो कौन सा भाग्य हमारा जीवन में आएगा? दुनिया का सब भाग्य हमारा जीवन में आएगा। आमीन। क्योंकि परमेश्वर का बच्चों के लिए ही बनाया है ये दुनिया का सब भाग्य। सब चीज परमेश्वर का बच्चों लोगों के लिए बनाया है परमेश्वर। मगर वो भाग्य हमारा जीवन में क्यों नहीं आता है? हमारा जीवन में वो भाग्य आने के लिए हम वचन ध्यान करना पड़ेगा। वचन को संपूर्ण समर्पण से स्वीकारना मांगते। हालेलुया। दिन रात परमेश्वर का वचन को स्वीकारना मांगते, ध्यान करना मांगते। हालेलुया। तो आज हम एक वचन चिंता करेंगे, जेनेसिस ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 39:4 നമ്മൾ വായിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം. പ്രാണനായി ഇരിക്കുന്ന രക്തത്തോടു കൂടി മാത്രം. 39 ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 39:4 ഇങ്ങനെ എഴുതിയേക്കുന്നു, അതുകൊണ്ട് അവൻ്റെ യജമാനൻ കണ്ടു, അതുകൊണ്ട് യോസഫ് അവനെ ഇഷ്ടനായി ശുശ്രൂഷ ചെയ്തു. അവൻ അവനെ ഗൃഹവിചാരകനാക്കി, തനിക്കുള്ളതൊക്കെയും അവൻ്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചു. അവൻ തൻ്റെ വീടിനും തനിക്കുള്ള സകലത്തിനും അവനെ വിചാരകനാക്കിയത് മുതൽ യഹോവ യോസഫിൻ്റെ നിമിത്തം മിസ്രൈമിൻ്റെ വീടിനെ അനുഗ്രഹിച്ചു. ഹല്ലേലൂയ. നോക്കിക്കേ, അവിടെ വലിയ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. ദൈവത്തിൻ്റെ വാക്ക് കേട്ട് അനുസരിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ധ്യാനിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്കുണ്ടാകുന്ന അനുഗ്രഹത്തെക്കുറിച്ചാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. അത് നമുക്ക് 39 അധ്യായം 39:1 മുതൽ വായിച്ചാൽ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാകും. ഹല്ലേലൂയ. जेनेसिस उत्पत्ति का पुस्तक 39 का पहले वचन से लेकर हम पढ़ेगा तो वो एक परमेश्वर के साथ परमेश्वर का वचन ध्यान कर परमेश्वर के लिए जीने वाला यूसुफ का जीवन में क्या क्या हो गया, कैसा परमेश्वर उनको स्वीकारा करके लिखा है। जरा हिंदी में पढ़ सकते हैं क्या? 39 का पहले वचन। हाँ। जब यूसुफ
मिस्र में पहुंचाया गया, तब पोतीपर नामक का मिस्र ने, जो फेरोन का हाकिम और अगर अंगरक्षक के का प्रधान था, उसके इस्माइलियों के हाथ से जो उसे वो ले गए थे मोल मिल लिया। हाँ, तो उसका दूसरा वचन भी पढ़ो। पढ़िए। यूसुफ अपनी मिस्र स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, देखो। इसलिए वो भाग्यवान पुरुष हो गया। हालेलुया। पर कौन सा भी हालेलुया। जगह में हो, कौन सा भी घर में हो, तुम्हें भेज दिया है तो भी तुम्हारे साथ परमेश्वर है तो तुम भाग्यवान बनते रहेगा। हालेलुया। तुम्हें भाग्य भरा जीवन मांगते तो परमेश्वर तुम्हारे साथ होना मांगते करके लिखा है। यूसुफ के साथ वो मिस्रैम का घर में भेज दिया, उसको भेज दिया तो भी परमेश्वर उसके साथ है, उसके लिए वो भाग्यवान बन गया करके लिखा है। हालेलुया। उसका तीसरा वचन पढ़िए। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वो करता है उसके यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। हालेलुया। देखो उधर क्या लिखा है? मिस्रैम, कौन सा मिस्रैम को वो यूसुफ को भेज दिया है। उसका घर में वो रहने का समय परमेश्वर उसके साथ है करके मिस्रैम्य मनुष्य को भी मालूम पड़ा करके उधर लिखा है। और वो मिस्रैम्य क्या बोल रहे? यहोवा परमेश्वर यूसुफ के साथ है करके उनको मालूम पड़ा। और यूसुफ को जो भी कार्य करने के लिए परमेश्वर वो करने के लिए जाएगा तो परमेश्वर वो कार्य साध्य कर दे रहे करके मिस्रैम मनुष्य को मालूम पड़ा। हालेलुया। हमारा जीवन में परमेश्वर जो प्रवृत्ति कर रहा है वो हमारे आजू बाजू वाले को मालूम पड़ते हैं क्या? हम वो गवाह बनकर जीना मांगते हैं। हालेलुया। इधर यूसुफ के ऊपर जो भी प्रवृत्ति परमेश्वर का आ रहे वो प्रवृत्ति दूसरे को भी मालूम पड़ता था। യോസഫിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം ചെയ്യുന്നത് മിസ്രൈമ്യനായ അവന്റെ യജമാനന് എല്ലാം അറിയാമായിരുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. യോസഫ് ചെയ്യുന്നതെല്ലാം സാധിക്കുന്നു എന്ന് മിസ്രൈമ്യ उनको खरीदा हुआ व्यक्ति को मालूम पड़ा। यूसुफ के साथ परमेश्वर है करके उनको मालूम पड़ा। तभी क्या किया उसने? चौथा वचन में बोल रहा है वो मिस्रैमी मनुष्य यूसुफ को बहुत प्यार करने लगा करके उधर लिखा है। परमेश्वर साथ रहने वाला व्यक्ति को दुनिया प्यार करना शुरू करेगा। हालेलुया। दुनिया को पहचान में आना मांगते हैं। तुम्हारे साथ मेरे साथ परमेश्वर है करके मालूम पड़ेगा तो सब लोग हमारे से प्यार से व्यवहार करेगा। देखो उधर 4 जरा पढ़िए। तब उसकी अनुग्रह की सृष्टि उस पर हुई और वो उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया। फिर उसने उसके अपने घर का अधिकारी बना के अपना सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। हालेलुया। हालेलुया। देखो हम कितना परमेश्वर के साथ है।
और हमें बहुत से लोग नजर रखते हैं परमेश्वर। मेरे को ऐसा लगता है वो मिस्रैम्य व्यक्ति के घर में അടിമയ്ക്ക് എന്തുവാ പറയുന്നത്, അടിമയായിട്ട് वो व्यक्ति खरीदा है ये यूसुफ गुलामी को, गुलामी गुलामी गुलाम बनकर उनको जीने का था। वो उन्हें सभी काम करना पड़ता था उसको, यूसुफ को सब काम करना पड़ता था। मगर एक मनुष्य नहीं कर सकते ऐसा भी काम गुलाम लोग करना पड़ता है। हालेलुया। तो ये जो मिस्रैम्य व्यक्ति जो यूसुफ को खरीदा है, वो व्यक्ति ध्यान से यूसुफ को देख रहा था। ध्यान से देखने का समय जो मनुष्य को कर नहीं सकता है ऐसा काम यूसुफ कर रहे करके मालूम पड़ा, तो देखा तो उसको मालूम पड़ा पर यहोवा परमेश्वर ये यूसुफ के साथ है करके मालूम पड़ा। तो ये व्यक्ति मिस्रैम्य व्यक्ति क्या किया, यूसुफ को प्यार करने लगा। यूसुफ को उसका घर का हर एक कार्य सौंप लिया। तो ये घर को चलाने वाला बन जाओ करके बोला। हालेलुया। जो व्यक्ति के साथ परमेश्वर है उस व्यक्ति के द्वारा असाध्य को साध्य करेगा परमेश्वर। हालेलुया। യോസഫിനെ അവൻ സ്നേഹിക്കാൻ തുടങ്ങി, അവൻ്റെ വീടിൻ്റെ ഗ്രഹവിചാരകനാക്കി മാറ്റി എന്ന് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു. തനിക്കുള്ളതിൻ്റെ എല്ലാം വിചാരകനാക്കി മാറ്റി എന്ന് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു. जो कुछ उनको था सबके ऊपर अधिकारी बनाया यूसुफ को करके उधर लिखा है। हालेलुया। तो ये हमारे जीवन में हमें आसमाना मांगते हैं। हालेलुया। परमेश्वर हमारे जीवन में है तो हम किधर भी काम करें, हम किधर भी गुलाम बनकर काम करें, कोई पगार नहीं है ऐसा काम करे तो भी परमेश्वर का प्रवृत्ति उधर आएगा तो तुम्हें उधर का उड़मयाकी माटो, अधिकारी बना देगा। हालेलुया। अब हम गुलाम बनकर उधर काम करने के लिए गया तो हमें क्या बनाएगा, അധികാരി ബനാദേക. ഹല്ലേലൂയ. നീ ഉടമയായി മാറും, നീ അടിമയല്ല. നിന്നെ അടിമയാക്കി അവൻ മേടിച്ചുവെങ്കിൽ ഇന്ന് ദൈവം നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിന്നെ അവൻ ഉടമയാക്കി മാറ്റുന്ന ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ദൈവം. ഹല്ലേലൂയ. परमेश्वर के सन्निधि में हम कितना लगाव रखकर कितना ध्यान से परमेश्वर का वचन को सुनते हैं, वचन को हम स्वीकार करता है, उसी हिसाब से परमेश्वर का प्रवृत्ति जो सबके जीवन में गया वैसा ही हमारा जीवन में आएगा. हालेलुया. तो ദൈവം നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പരിശോധിക്കേണ്ടത്. ദൈവം നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പരിശോധിച്ച് നോക്കണം. യോസഫിൻ്റെ കൂടെ ദൈവം ഇരുന്നത് കൊണ്ട് അവന് എവിടെ വീണിട്ടു, പൊട്ടക്കിണറ്റിലിട്ടിട്ടു അവൻ്റെ കാലോ കയ്യോ ഒന്നും ഒടിഞ്ഞില്ല. ഹല്ലേലൂയ. പൊട്ടക്കിണറ്റിലിട്ടിട്ടു वो पानी नहीं था ऐसा कुआं में डाला यूसुफ को उनका भाई लोग, फिर भी उसका हाथ पैर टूटा नहीं है. एक भाई को मन पिघल गया. कौन पिघलाया? डाला हुआ एक भाई को, कुएं में डाला हुआ एक भाई को मन पिघला कर दिया परमेश्वर. हालेलुया. वो परमेश्वर यूसुफ के साथ है, इसके लिए वो कुआं में डाला हुआ भाई भी उसको बाहर निकाल दिया. और एक मिस्रैम्य व्यक्ति ने एक धंधा करने वाले व्यक्ति को भेज दिया. वो लोग मिस्रैम्य को भेज दिया यूसुफ को. किधर भी गया तो भी उसको, उसका शरीर को, उसका कोई आँच आने के लिए परमेश्वर दिया नहीं. हालेलुया. कोई भी तकलीफ होने के लिए परमेश्वर दिया नहीं. क्यों? परमेश्वर उनके साथ है. उनके साथ परमेश्वर क्यों रहता है?
वो दिन रात परमेश्वर को ध्यान करने वाला व्यक्ति था। हालेलुया। हालेलुया। एक व्यक्ति के साथ परमेश्वर इतना लगाव से लगे रहने का है तो वो व्यक्ति परमेश्वर को कितना